Hello students, now in this video we are going to continue the summary part of the chapter Footprints Without Feet. As you know that Griffin is there in a storeroom and he ate something there and he wore some clothes to keep himself warm. And now as you know that he was sleeping there in the store on a pile of quilt. The next morning some store associates enter the store and they were surprised to see a person there on a pile of quilts. Now they start running behind Griffin. And Griffin at once surprised to see so many people around him, and at that time he take quick decision and start removing his cloth, and one by one every part of his body became invisible. Then he tried to harm those associates as well as he stole some garments also from there. After that one more incident happened. He enters in a storeroom, he enters in a shop, and at that time in that shop he entered and stole some money. After some time he decided that London is a very busy place to live there. So he decided to move on in a place Iping. इसीलिए वो Iping village पर move on होने का decision लेता है. Now the summary parts is the next morning before he wakes up the next morning before he wakes up some store associates had been started started following him. Associates had started following him. वो सब लोग उसकी तरफ आ रहे थे उसे वहां से भगाने के लिए, उसको हार्म पहुंचाने के लिए. He removed all his clothes instantly. He means Griffin. Griffin क्या करता है? रिमूव कर देता है all his clothes instantly and became invisible once again. एक बार फिर से बेटा वो क्या हो जाता है? इनविजिबल बन जाता है. Now he is wandering without clothes in chilly winter. Now he is wandering. As you know that when he wears cloth तो विजिबल होना स्टार्ट हो जाता है, विजिबल हो जाता है. जिस भी बॉडी पार्ट को वो कवर करेगा वो पार्ट विजिबल हो जाएगा. ठीक है, तो अब वो स्टोर रूम से भाग जाता है, अपने क्लोथ्स रिमूव कर देता है और वो इनविजिबल बन जाता है. तो स्टोर रूम से भागने के बाद क्या होता है? नाउ ही इज वॉन्डरिंग अलोन without clothes in chilly winter of London. Without clothes in chilly winter. Now he is wandering without clothes in chilly winter of London. Okay. अब आगे क्या होता है? He then decided to take clothes from a theatre company. उसके बाद एक और इंसिडेंट होती है बेटा. वो क्या करता है? He then decided to take clothes from theatre
कंपनी। वो एक थिएटर कंपनी से कुछ क्लोथ्स फिर से चुराने का डिसीजन लेता है। उसे लगता है कि अब मैं थिएटर कंपनी से कुछ कपड़े चुरा लूंगा। ओके, तो सच में वो चुराता है क्या? ही हैड स्टोलन डल ग्लासेस, ही हैड स्टोलन डल ग्लासेस। वो डल ग्लासेस चुरा लेता है। He had stolen dull glasses, hat and some other things, hat and some bandage। कुछ बैंडेज भी वो चुरा लेता है। क्यों चुराता है? वो बैंडेज की क्या जरूरत थी उसे? क्या जरूरत थी? सम बैंडेजेज फॉर कवरिंग हिज फेस, अपने फेस को कवर करने के लिए वो कुछ चीजें थिएटर कंपनी से उठा लेता है। फॉर कवरिंग हिज फेस। ओके, now what happened in the story? He had just when he goes to a shopkeeper's place, वो फिर एक शॉपकीपर की शॉप पर जाता है। He then goes to a shopkeeper's place। वो शॉपकीपर की प्लेस पर जाता है and stole all his money, और उसका सारा का सारा stole all his money, और उसका सारा का सारा पैसा वो चुरा लेता है। ठीक है। Soon he realizes, फिर वो जल्दी ही महसूस भी करता है। Soon he realizes that London is quite busy place. Soon he realizes that London is quite a busy place. Quite a busy place to live like this. Busy place to live like this। इस तरीके से रहने के लिए बिजी प्लेस है। तो क्या डिसाइड करता है? सो ही थॉट ऑफ मूविंग टू द आइपिंग विलेज। सो ही थॉट ऑफ मूविंग, और फिर वो मूव ऑन होने का डिसीजन लेता है। सो ही थॉट ऑफ मूविंग। अब कहाँ मूव हो रहा है बेटा? वो मूविंग टू आ आइपिंग विलेज। नाउ स्टूडेंट्स, यू नो दैट एक और इंसिडेंट स्टार्ट होने वाली है आइपिंग विलेज में ग्रिफिन की एंट्री के साथ। टिल नाउ वी स्टडीड दैट ग्रिफिन डेवलप्ड अ ड्रग दैट कैन मेक अ पर्सन विजिबल and he gulped that drug himself and became invisible. Now he is just like one can feel him, touch him physically but can't see him. When he remove all his clothes, he become completely invisible. So now the most we can say that the problem in front of Griffin is there. It's difficult to live a person without clothes in the chilly winter season. Now he is there and there wandering without clothes, because you know that when he wears cloth तो उसका वो that he become visible. ओके, फॉर एग्जाम्पल वो अपने फेस को कवर नहीं करता है तो उसका फेस दिखाई नहीं देगा, तो वो फेसलेस पर्सन दिखाई देगा, तो उसके सामने वो प्रॉब्लम है। अब ये भी प्रॉब्लम है कि वो किस तरीके से चिल्ली विंटर सीजन में रहे। दैट्स व्हाई ही इज वॉन्डरिंग हियर एंड देयर। वंस ही एंटर इन अ स्टोर, stole some food, stole some clothes and stay there for one night. But when in the morning store associates came, they started following him and he again removed his clothes and became invisible. In the same way, he entered in a shopkeeper's shop and stole all the money. Now at that time he decided that it's not easy to live London. That's why he decided to move on a village, and the name of that village is Iping. Okay, so we'll continue summary part. In the next part we'll study what happened and which are the incidents those are related to Iping village. Okay, so thank you students. We'll continue the summary part in the next video.